शम्भु तुभ्यम्। खाते हैं स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे। ये ज्योति पुंज महान पंचाचार के पालक है, हो देश धर्म व समाज उन्नत ऐसे विचारक है क्रांतिकारी उपदेश श्री संघ के संचालक है। ये सदाचार समता सम्यक ज्ञान आराधक है। हर कोई बैठा पल के बिछाए, हर कोई बैठा पल के बिछाए, धर्म के बजे नगाड़े हैं। हर कोई बैठा पल के बिछाए, धर्म के बजे नगाड़े हैं। अपनी धवल सेना के संग में महाश्रवण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। प्रवास केवल झांकी है, गुरु चौमासा बाकी है। गुरु की मर्जी चाहेंगे, चौमासा तो हम ही पाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आज आपके वेलकम में पूरा परिवार पलकें बिछाएं आपकी राह में बैठा है और आपका स्वागत करता है। सजा दो घर को फूलों से, सजा दो घर को फूलों से, गुरुजी आज आए हैं। सजा दो घर को फूलों से, सजा दो घर को फूलों से, गुरुजी आज आए हैं। गुरुजी आज आए हैं, गुरुजी आज आए हैं, गुरुजी आज आए हैं। लगे पावन सा घर अपना, लगे पावन सा घर अपना, गुरुजी आज आए हैं। सजा दो घर को फूलों से, गुरुजी आज आए हैं। सजा दो घर को फूलों से, गुरुजी आज आए हैं। गुरुजी, आज सारी संगत आपके दर्शन के लिए आई है। हमारे घर पर जो जिस कामना से आया है गुरुजी, उसकी कामना पूरी करना, अपनी ब्लेसिंग सबको देना और सभी की झोलियां भर देना। आई संगत है दर्शन को, रूप भाए है हर मन को। आई संगत है दर्शन
मन को रूप भाए है हर मन को, रूप भाए है हर मन को, खुशी से भर उठी आंखें, खुशी से भर उठी आंखें। गुरु जी आज आए हैं, सजा दो घर को फूलों से, गुरु जी आज आए हैं। सजा दो घर को फूलों से, गुरु जी आज आए हैं। गुरु जी, संगत के साथ साथ स्वागत में पूरी सृष्टि आपका स्वागत कर रही है। इंद्रदेव जल बरसा रहे हैं, कोयल कूक रही है, मोर नाच रहे हैं। कैसे बरसती है घटा काली, कूके कोयल ये मतवाली, कोयल ये मतवाली, कूके कोयल ये मतवाली, मयूरा नाच बगिया। He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha, and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, सर्वं शांतिः। अहम ब्रह्मास्मि।
So good evening, everyone. Welcome to the Q&A session. So I believe like you have come out of that aura of Shivratri, or you are still there, not sure of that. But I believe whatever way it was done, and I believe all the people, those who were there, either attending online or offline, and special thanks to the people, those who took the time and to visit us in person, all the way from, I think, across the globe and pan-India. So thank you, everyone. And we believe your travel was worth. And if you have arrived here for the first time, you might have experienced the aura that this family carries along with it. So thank you for the people, those who traveled, and thank you for the people who are from here and they never made the other people feel that they have traveled this far. So starting from Haribhai to all the volunteers, naming them would be like not justifying what they did. So whoever did, whatever way you did it, now we are thankful to all of you. And yes, शिवरात्रि कभी खत्म नहीं होती. हमारी शिवरात्रि, जब लोग कहते हैं शिवरात्रि खत्म हो गई, हमारी शिवरात्रि शुरू होती है इस शिवरात्रि से लेकर अगले शिवरात्रि तक, क्योंकि हमारे लिए तो हर रात्रि शिव की ही रात्रि है. So whatever way we have celebrated, thank you everyone. And now, as Holi will be around like March 8th, so be ready for another one. As I said, like I'll be giving you specific processes, because these are the 4 nights that we call as this Shivratri, then it comes Holi, then the next 2 are there, right? Deepavali. So these are the major Kalaratris during which any kind of sadhana gets the maximum benefit out of it. So we are all, I can say in one way, blessed by this divine in this year, that everything is falling so closely. But I don't know what comes next after Holi, but might be we'll be diving deep again back to our own selves. Till that, let's go along with the processes. Certainly, I want to come up with 2 specific processes, Haribhai, apart from the one that I'll be giving for Holi. One is the Daridra Dhwans, means especially people for whom money has become a problem. It's not that they didn't had money. It's like money is not staying with them, or rather, it has become something like a concern to them right now. Means it's not that they're not earning. Either the earning has stopped, either there is a blockage in the money, or it has happened in such a way like money is coming, but it is always hand to mouth kind of stuff. So दारिद्रता आ गई है, जहां पे ये कहा जाता है कि लक्ष्मी परदेश या परलोक चली गई है. Means Lakshmi has left that space. So I'm planning to bring her back. Anybody interested? Obviously to your homes. Because for me, she's already always here. So why not call her back to your homes? That is one thing, because the processes I will be giving you, that's one thing. The second thing of concern that I am coming across, because I've got a lot of questions on that, Haribhai. Like many people are asking, what about the students, those who are especially preparing for the competitive exams or any kind of interviews, or they're going for higher studies or anything, that is because this is exam time. So I see more than kids, the parents are more into pressure, I believe, like as if they are going to write the exams. But anyways, whatever kind of exams that you are doing, you are going to go ahead, any kind of competitive exam, any kind of competition itself, I would like to bring that process for the students as well.
so that they can benefit maximum. And there are two processes. Sorry, right. One for the good students, those who just need a little bit push, and another for those who need a greater push. Rather, you can say push, pull, throw, kick, whatever you can call it. For them, we want to come up with something, because if there are processes and if that can benefit everyone, why not? And I am quite excited about that because it shows results. So I believe like all our kids of this family will be not only those, but the other people will also be benefiting out of it. So that's the another process that I'm about to give, and I will be giving them very shortly. Apart from the one that I'm thinking of giving it to you for, especially for Holi. So apart from these two, if you have any burning issues that you want me to address, or any particular thing that needs urgent attention of ours, I believe if you ask me, I will create, or I will design that something for you so that you all benefit by doing that through this time frame of till Holi time. Okay. So that's it from my side. And now we will take up the questions. Revati ji, she's there. Yeah, Revati, please unmute yourself. Pranam So- Guruji. First of all, Pranam. I am so delighted that I actually met everybody. So I feel closer now to everyone. And not that I didn't know them earlier, but actually seeing them made me feel very happy. So, Good. and So hopefully our name falls into that as well. so I met you 2 days before Shivratri. You know, the others I met on that day. So, wo hai. Second, my friend Prerna is here today also. And Guruji, Mahadev, I want to introduce one more friend of mine who's joined today. And Deepti ji, right? yeah. So, Hari Bhai, if you can, Hari Anna, not Hari Bhai, sounds very like really like, you know. No, in that way, Revati ji, Don. Imon always calls him, like whenever he sees him, he says Haryana. So When he I'm says, also what going is to say Haryana? Haryana. Like, he says Haryana. Haryana, yeah. So I want to introduce Dipti to you. So Haryana, if you can just focus on Dipti and So Mahadev. both, so Deepti ji and Prerna ji, thank you for being here. And I believe like your time would be worth here. And if Revati ji has brought you here, that must be, I never believe like there are accidents, there are always designs. And I believe something must be there as a design for you. So we are here, and welcome to this small, little, cute and beautiful family. I'm so proud of it. And everyone of here, you should meet these people. They are, I can say, like the walking angels on earth. And angels means males included, okay? And suddenly they will ask me, what about us? I have to find a word for them as well, but angels are angels anyways. Dipti, would you like to say something? Haryana, if you can just unmute Dipti. Yeah. Yeah, Deepti, you can unmute. Pranam Guruji. Pranam, I'm Deepti so ji. happy. I'm so happy to be here. Oh, so that means a good feedback has been given because Absolutely, absolutely. She's And from Indore. She's from Indore. okay. Oh, great. I'm so happy to be here, and I'm really, blessed that I could join surely- this platform. We surely look forward to adding more values to all of us. And Yes. I believe like this is how we grow in a family. So thank you for being here. Thank you for believing Revati I'm ji really- and being here today. Yes, I am really thankful to Revati ji, and of course you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Deepti ji. Thank you, Deepti. So before any other question, I have to say something. So Mahadev, I please. think you should plan a retreat to, let's all go to Hardwar. In summer. I don't know when, but आप सोचेंगे तो हो जाएगा. So we should go and stay in this place called Amrit Bhavan. It's because it's on my bucket list. I want to go, but I want to go with all of you. So I think let's just it has to happen. I don't know when, but we'll go with you only. Okay.
Now, Haryana, it's up to you when you plan it, and we shall all go there. Sure, Let's dump it on Haryana and make sure that it happens. Sure, Revati ji. We will plan. Thank you. Okay. Sure, Revati ji. If that is in the bucket list, we will clear the bucket anyways. Yes. Yeah. Amar ji. Oh, Please, the vibrant one. You see, he is shining brighter than the sun, I believe. Good evening. Good evening, Manoj ji. Amarji. How are you? Fine. Good Much to see you better. at your home now. No, I just wanted to have two questions. काफी दिन से काफी हफ्तों से था. One is, एक तो आपको पता होगा महाप्रसाद या प्रसाद in a temple when some things are offered and then Okay. it has been distributed to the devotees. Okay. And very few places I've heard in even Gujarat somewhere they say ki you have to eat that within the temple premises only, don't take it out. Okay. And there are instances people putting in their pocket secretly taking it out, but they are met with accident or they died or major something mishap happened to them because they did it outside the temple wall, or they ate it or they kept it in the pocket or whatever. Okay. But even in Puri, Mahaprasad, we take on outside and we eat also, though it is always told ki keep it in a sacred place and other things. But in Puri and other places we see, we do keep our foot also on that, and things have happened. They are not managed, but I don't remember anybody getting hurt or getting kind of punished for that. Okay. So why is such a case happened in some of the temples? Like I heard not only Gujarat, one or two where there is a strict restriction and they will ensure that you don't take that food item, maybe a laddu or maybe something eatables out of that temple premises. Why it is so? Second, I will tell after. Okay. Very good question, Amarji, because generally people don't even get into this question. So thank you for bringing this up. So first and foremost thing, what is the rule of eating the prasad, right? So we'll start from there. Then I will take you to the next step of it where you are asking like why this mishap happened and why there is a strict rule not to take it away. Okay. First and foremost thing, how a prasad should be consumed, which God's prasad should be consumed, which God's prasad should not be consumed. So now it comes into that space. Shall I? Is it good? Yeah, please. Okay. So let's say prasad, the first and foremost thing, how it becomes prasad, the food that becomes a prasad kind of stuff. So I have told you many times like how it works. The same story, because few new people are there. I would like to repeat that. I believe like that is worth repeating because so that they go and spread the same thing. And Amarji, I was traveling to Bhubaneswar one day in train. Right. So I was having a talk with all the people around and there was a kid. Okay. And very logical kid, I believe, like might very intelligent because he had this question. He said, I was talking about all these things and he said, so now tell me, how does a laddu become a prasad? I said, as you would answer to any normal boy, you said you put it in front of the God and it becomes a prasad. And he then said, what? I don't see any change in it. I said, what do you mean? The color does not change, the weight does not change, the taste does not change. Nothing changes. Then why do you call it as a prasad? Now you see logical kids, you have to give a logical answer to them. I said, okay. Now you have to do something, and if you can do that, I will tell you why it becomes a prasad. When you say nothing changes, I said the God does not eat in the form of having it like eating that we eat through mouth, lekin aghran hota hai wo, means through smell that is taken, because wo looks ऐसे तत्वों में है that it only can take the ether of it. Okay, जो आकाशिक जो तत्व होता है उसमें वो ग्रहण करते हैं वो लोग. इसीलिए आप देखे होंगे when we do the havans and all those things, we put good things that has a good smell in it, right? ऐसे चीजों की, सात्विक चीजों की सामग्री इस्तेमाल की जाती है. But he was not happy with that. I said, okay, let's go in a practical way then. And I asked him, do you have a book? He said, I have a book. Okay, I said, bring it up. And when he brought it out, I said, okay, read the first page of it. He read the first page. I said, read it again. He read it again. I said, now you know what is written on the first page? He said, yes. I said, now close it. And now I asked him, tell me what is written on the first page. He told the entire sentence. I said, now open the book.
He opened the book. I said, anything changed in the book? The color did not change. The weight did not change. Nothing has changed. The ink has not faded. But how did it enter into your head? Now tell me, and I will tell you how God eats the food and how it becomes the prasad. Because it is happening at such subtle level, it does not have a physical change to it. So ye ho gaya prasad. Yeah, my And question was different. No, I'm coming there. I just wanted to start there so that I can create the base. Now the question is prasad. Whose prasad you should eat and whose prasad you should not? First and foremost thing. शिव के पास जो प्रसाद चढ़ता है क्या खा सकते हो आप? Can you eat the prasad that is given at Shiva? Because majority of the prasad that is given is in the form of dhatura, bale, and all those things that is given out there. So more of a poisonous kind of thing. Why it has been done in that way? ऐसे चीजों को क्यों चढ़ाया जाता है जो आप प्रसाद के रूप में नहीं खा सकते? Now you have to understand this also. उनके जो साथ चलते हैं गण प्रेत, okay? So that kind of prasad जब चढ़ाया जाता है उसको कोई ना खाए. Because all the other gods you see, they have all the good people around them, yes or no? लेकिन महादेव एक ऐसे हैं जिनके साथ भूत प्रेत किन्नर सब चलते हैं. So what they did is he chose certain food that you won't eat. But generally to other temples, what do? You take the same sweet that you will get it back and you will eat it. जो आपको पसंद है आप वो चीजों को लेके जाते हो. Okay, now coming to another thing. प्रसाद खाने की जो विधि है. Because the food, when you are carrying it away along with you, the premises had a certain kind of vibration, right? So within that vibration, if you are consuming that food is still vibrating at the same frequency. But when you are moving it out of the temple, what happens is the vibration and the frequency outside might not be that great. So what happens? It is not that great anymore. So that is the reason specifically it is said you eat it within the temple. Second thing, if you are taking this Bilva Patra, why is Bilva Patra put on Shiva? Bilva Patra is put on Shiva because that Shivaling has a vibrational frequency. And as I have told you just few weeks ago, the Bilva Patra can have that frequency along with it for 11 days. 11 दिन तक उसके अंदर वो vibrations रहते हैं. So if you carry a Bilva Patra to home, no problem. Either you eat it there or you carry it there. It will be having no issues with it. Okay. Now coming to other foods. All the other gods, generally you consume the food there, but majority of the time what we do, we pack it up. Correct. We want to take it to our homes. We want to feed our. वो श्रद्धा है आपकी. वो आपकी श्रद्धा है. There is nothing wrong in that. So when we are coming to certain places where वो वर्जित है, means it is not allowed, and when you specifically mentioned about temples where if they have taken it outside, mishaps has happened. And it is restricted. You should not take it outside. You should not steal it. You should not hide it and take it away, right? Correct. यही है ना आपका सवाल? Yes, तो मैं yes. बताना चाहता हूँ आपको. You know, okay, so you basically know Puri very well. That wall around that temple. What is Yeah. that wall? That sound of sea will not come inside. It What will is be that just- wall? Meghnad, Meghnad, हाँ. right? So Meghnad का जो प्राचीर है, the wall that is surrounding the temple, what is its quality? As you rightly said, the sound of the sea can be heard outside the temple premises, but once you enter into the premises, you will never hear the sound of the ocean. Right. What is doing that? Because it is not that the wall is completely closed, it is open. No, beyond the the sound should temple, you come. can get it. Even after the temple, you will get it. Aram se. Yes. So what is happening in that space? So you have to understand कि वहां पे एक boundary बनाई गई है, a circumference. Outside that circumference, the sound of the wave is available. What is the sound of the wave and why is it not allowed inside the temple? क्योंकि जो समुद्र का जो वरुण देव है, उनको एक बार घमंड हुआ कि मंदिर क्या मैं कहीं पे भी अपना गूंज सुना सकता हूं, मैं इतना विशाल हूं.
तब मेघनाद का दीवार बनाया गया. This wall was built and it was not allowed to enter inside. But the moment you come outside, you hear the sound again. What is the sound? The sound of the ego. It depicts that outside the temple your ego exists, but the moment you enter into the temple, that ego should not exist. That's why you go, how rich you are, how affluent you are, but everybody has to sit down on the floor and eat. Yes or no? Yes, yes. And anybody can go and take from your plate and he can eat from your plate. Yes or no? Yeah, without even asana, you are not supposed to sit on asana also. Asana also, you have to sit on the ground and you have to eat the food. And even you won't believe if you have gone there or not. Now they are making it a bit better, but all that food is spread across and you will be sitting on that and eating. It is, it Yes. would be looking like very unhygienic place. Yes or no? Exactly, correct. But do you feel Right. unhygienic in that space? And that water body also, you take it and everybody put their hands in. You take that water in that broken clay pot Like clay and you pot, drink yes. with that. So what Everybody is does that. The Meghnad wall is nothing, but it is like once you enter, your ego should be shattered outside. You should not be entering into the temple with that ego. That means no noise of within. Means that noise that is outside will be outside. So that is one thing. So what has been happened? A boundary has been created inside which these are not allowed. Okay? लेकिन आप जिस मंदिर का बात करते हो, वो कौन से देवता का मंदिर है? Can you specify? And in Gujarat, I don't remember a temple, but it is. Kamlendar ji knows that. So you- Kamlendar ji, please tell me about the temple once. प्रणाम गुरुदेव. Yeah, sorry. Please unmute it once again. प्रणाम गुरुदेव. एक जैन टेम्पल है सर यहाँ पर महुड़ी करके जगह है गांधीनगर के पास में. Okay. गांधीनगर के पास में. तो उसमें अलाउड नहीं है बिल्कुल भी. तो जो भी प्रसाद है वो वहीं पे निपटा के ही आना पड़ता है. मतलब आप उसको अगर आपसे खाया नहीं जाता तो वहां पे छोड़ दीजिएगा, कोई भी खा लेगा उसको, लेकिन आप लेके नहीं आ सकते. इवन मतलब कपड़ों को भी ऐसे झाड़ के आना पड़ता है. If you carry? एक्सीडेंट्स हुए हैं कई. Okay. Thank you. So, let me help you with that also. Generally, Amarji, generally all these things, आप जैन टेम्पल का बात करते हो, जनरली पाताल भैरव का मंदिर जो होता है, काल भैरव का मंदिर जो होता है, तंत्र के द्वारा निर्मित जो भी स्थापित जो मूर्तियां या विग्रह होते हैं, उन सारे जगह के शक्तियों को किलित किया जाता है. Once that energy is bounded. Okay. So that kind of food that is उनके पास प्रसाद चढ़ाया जाता है. अगर आप उसको बाहर लेके जाते हो, I will come to the Jain temple also. Okay. Let's understand our part first, then I will go there. Jain based on tantric things or what? No, they won't be. Buddhism is, but Jainism is not. Exactly. Okay, so that's why I'll tell you what is the case there. So now, in such cases, what happens is that kind of energy, जो तांत्रिक विधि से मंत्रित किया गया है, उसको लेके भी नहीं जाना चाहिए आपके घर में. Because what happens is when you are carrying that, if you don't know how to बंधन कैसे करते हैं उस चीज का, means you are carrying a food in your hand. Do you remember, all of you might have seen our grandmothers and all those people, whenever you brought any food from outside, they will break something and throw it outside. Yeah. होता था या अभी भी होता है. खाने के टाइम, बनाने के टाइम also you take it out something. Take it out. You know why? देखो. Now understand the source of the soul. कुछ especially when you are they do it, especially you are carrying any non-veg things. Okay, vegetarian things also they throw, but if you are carrying anything non-veg along with you, what happens is जो नकारात्मक शक्तियां हैं, they get attracted towards this. इसे कैसे attract हो सकता है कोई? You see, if you are carrying something and there is a dog around in the lane, by the smell itself it will start running towards you. Yes or no? उसको क्या होता है? He is attracted to that. So नकारात्मक शक्तियां ऐसी होती हैं जो ऐसे सारे चीजों के प्रति आकर्षित हो जाती है. So they get allured towards such kind of things. So what happens is कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब सात्विक चीज लेके बाहर जाते हो, they are also on the
वर्ज ऑफ टेकिंग इट अवे, बिकॉज उनको ऐसा श्रापित किया गया है कि अगर उनको वो प्रसाद मिल गया, they will become more powerful in that space. It's just like this. एक नकारात्मक शक्ति है, and if I feed it continuously with something more powerful, what will become to him? उसकी शक्तियां बढ़ जाएंगी और नकारात्मक चीजें वहां पे और ज्यादा होने लगेंगी. That is the case where ऐसे जब तांत्रिक पद्धति से जहां पे भी स्थापित किया जाता है ना, there they don't even allow to take those kind of food. ये हो गया इस बात का. Now coming to the Jain thing. In that case, what has happened? In that case, in that surrounding area, still certain energies are there. If we go, we might even find out that. ऐसे शक्तियां वहां पे हैं जो कि हमेशा से उसी ताक में रहती हैं कि कब कोई लेके आए, and we will. और if just think, क्या कोई भगवान ऐसा हो सकता है कि आपने उसका प्रसाद घर लेके गए इसलिए आपका एक्सीडेंट करा दे? अब वही तो मेरा वैसे शक्तियां नहीं होती है. सी देखिए, दैविक शक्तियां ऐसी नहीं होती हैं. स्पेशली जितने भी मेन गॉड्स एंड गॉडेसेस दैट वी स्पीक ऑफ, वो कभी ना श्राप देते हैं ना कभी आपके ऊपर गुस्सा होते हैं. ये लिख के रख लो. लेकिन फिर भी कभी कभी प्रॉब्लम क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग पीपल. जस्ट लाइक दिस, यू वेंट टू अ टेम्पल एंड अननोइंगली और नोइंगली यू डिड समथिंग. गलती की है आप, और अगर गलती कुछ ज्यादा हो गई, इट्स ऑफ ए हायर लेवल काइंड ऑफ स्टफ, वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनके गण आपको नहीं छोड़ेंगे. वो कुछ ना कुछ करेंगे आपके साथ. सो इन दिस प्लेस, बिकॉज जैन पीपल डोंट गो इनटू तांत्रिक पद्धति, बट आई डोंट नो, इफ वी विजिट वी माइट नो समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर आल्सो. जाके देखे तो पता चल जाएगी है क्या वहां पे. ओके, सो ऐसे शक्तियां वहां पे है जो कि नकारात्मक शक्तियां हैं, बट दे आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर सच काइंड ऑफ फूड. एंड इफ यू आर कैरिंग दैट, just like a dog runs behind you, it is a similar case where they will try to snatch from you. और क्योंकि नकारात्मक शक्तियां, क्योंकि सकारात्मक शक्तियां हैं तो खाली खाना लेके चल जाएंगे. Have you seen these monkeys when you go to temples, they run towards you, right? Yeah, they take certain temples they will not do anything, they will be sitting there, you give them, they will take it. But there are certain temples where those monkeys will come and snatch and take it away. Yes, yes. दोनों तरीके के देखे कि नहीं देखे? Correct. So बंदर तो दोनों भी है. But even what is the Odisha में difference between these two? Similipal, some places it is there. Everywhere you go to any mountain ranges, you will find them. Correct. So Amarji, one thing that I can say, we have not visited that place, but this must be the case there. और लेकिन उसका उपचार किया जा सकता है. ये डर से जी रहे हैं वहां पे. They are living out of a fear in that space. If they find a way out कि किसके वजह से ये हो रहा है और उसको अगर मुक्त कर दिया जाए, then all these things will stop. So that can be done. So it is not that something that cannot be done. It is also coming into that realm also. So Kamlender ji is showing the image anyways. Haribhai, can you please put him on the screen? I want to see that actually. और थोड़ा पास में लाइए कमलेंद्र जी उसको. आपका फेस के सामने लाइए. Very good. Okay, send me this picture once. देख लो. अब देखो इनका रूप देखो कैसा है. Is a warrior, right? Right. Yes. Okay, fine. कमलेंद्र जी एक बार फोटो भेज दो मुझे. I'll just check on that. Okay. अगर उससे आपके सवाल से अमर जी और किसी का खराब ना हो, I think like your question was worth. Yeah. We'll see what is there. मुझे खुश लगा कि आपको रिकन्फर्म करना पड़ रहा है. एटलीस्ट मैं, आप तो बोले सब लोग सहज क्वेश्चन पूछते हैं, मैं थोड़ा तो डिफिकल्ट पूछा आपको. नहीं, कंफर्म करने के बात नहीं है अमर जी. I just don't want to keep you in darkness, right? Yeah. I don't want to confirm that. I want to see what is the energy that is there which is not allowing. हाँ, मतलब there's lot of accident has happened, lot of mishap has happened, so there must be some energy which is negative, blocking that, right? Blocking but that. It is definitely, it is not a divine energy. Oh, that was my question, was how come a divine energy will do such harm to common man? Maybe people are doing mischief, but ठीक है, even mischief करने के बावजूद भी क्यों देगा किसी, जैसे तो हम लोग बहुत mischief करते रहते हैं चारों तरफ. So that does not work that way. So it is not a specific thing, as you said. It is not a divine work. Absolutely not. Okay, so your second question, please.
A second question, मैंने जब अभी गया था हैदराबाद तो I have seen that statue of equality रामानुजम का जो there are 108 विष्णु का अवतार I suppose 108 small है. तो I had also seen that another way that is 64 योगिनी का अलग-अलग मंदिर भी है, उड़ीसा में भी है, कई जगह पे है. तो I mean is there all different form of energy in terms of either मैं कोरिलेट करना भी चाहूंगा, कोरिलेट करना भी नहीं चाहूंगा. एक फेमिनाइन है, एक अलग है, पुरुष एक स्त्री तत्व है. तो ये क्या है, दोनों अलग अलग तत्व है और उनका 64 अलग रिलम में जा रहे हैं और इनका 108 अवतार अलग, या ऐसा क्या है? आई मीन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है अमर जी. अब देखो ये रूम में भी जितने लोग हैं सब सेम है क्या? ये तो अलग अलग ही तो है, अलग अलग है ना. सो आप जो कर सकते हो मैं कर सकता हूँ क्या? जो कमलेंद्र जी कर सकते हैं आप कर सकते हैं क्या? नहीं ना. So that means we all are bestowed with a certain kind of power. We have a certain kind of energy within us. We have a certain kind of thought process, right? So ऐसे जब आप 64 योगिनियों का बात करते हो, so दो ही जगह पे हैं इंडिया में. एक तो हम जब ग्वालियर गए थे, so we visited that place, and the other one is in Chandipur, like near Bhubaneswar, like 20 kilometers away from that. वहाँ पे 64 योगिनी मंदिर है, लेकिन हम जो गए थे वो 64 भैरव मंदिर है. Okay. So when we are talking about that, yes, energies are different. You say, why so many energies? Because the creation does not work on one lever. It has multiple facets to it. So in order to run a particular way or a particular job, a certain kind of energy is required. So in order to take care of that, the creator also created all these energies in different forms. And these people have different, it's not that they don't have energy. Everybody, if you can go and just manage to get a glimpse of one deity, it is enough. ऐसा नहीं है, वो सर्व समर्थ हैं, लेकिन वो को एक एक ये दे दिया गया, means role that you play, right? So उस चीजों के लिए वैसे शक्तियों का आविर्भूत उसी कारण से हुआ है. जैसे आप 10 महाविद्याओं को ले लो, 10 महाविद्याओं का आविर्भूत अलग अलग कारणों से हुआ है. बिकॉज need of the hour that was created, right? जब need of the hour में वो create होता है, means that kind of energy is required at that time. That's why they have taken that form. जैसे आपने देखा होगा रक्त बीज को मारने के समय कालिका का जो रूप हुआ वो कैसा था, जब चंड मुंड को मारने के लिए जब चामुंडा बनी उसका रूप कैसे हुआ. So in order to deal with that kind of energy, a certain kind of form is taken. For example, if you have to boil potato, you take a pot, right? But if you have to roast or toast a bread, will you do it in a pot? No, you will need a pan. So why is that different? Even in the utensils, in order to cook the food, you would take different kind of utensils because the kind of energy that is required in that space. So all these things that we are talking about, these are all energy forms, all one. Let's see, you have so many things in your home. Okay, right now there must be a fan, there might be a refrigerator, there might be a TV, there might be a fridge. All these things are there. Correct. And the current that is flowing inside your house, is it the same or different? It is, yeah. It is same. Then why is the refrigerator cooling and while the microwave is heating it? It's all because of the wiring that it is there. Current is same, means spirit is the same. So all these things are acting differently because of the wiring, means the form that they have taken. So when we are talking about all these kind of different kind of entities or like deities, everyone is having the same kind of, including you and me. We are no different. The only thing is we are a little less wired, I believe. Or you are more enlightened than me or something like that. There is nothing called as more or less enlightened. Either you are or either you are not. I mean, See, can you tell me you are a cyclist and or not a cyclist? You cannot say I'm a middle cyclist now. Either this side or that side. You can. Right. So that's how it is. No, is that the something like, for example, in Ceridian, somewhere you find people don't lock the door and still nobody steals for Sunny that Signapur. area. Okay, so Sunny Signapur. Sunny Signapur. Or their place, if you must have known that Gram Devta, and they're powerful in that region or in that 200 kilometers or 20 kilometers. Okay. And there are so many Gram Devtas, so many.
Is that location wise also they अभिभूत होके वो लोग दिखाते हैं उनका शक्ति? Absolutely, absolutely. ये जब ग्राम देवताओं का बात करो ना, I will take a session on that also, Amardev ji. Like why Gram Devatas were created and what kind of energies they are. Okay, because everybody must have seen Kantara, and everybody has like a wow, what a movie kind of stuff. Correct. So होते हैं ऐसे शक्तियां होती है, हर एक क्षेत्र में एक एक शक्तियां होती है. जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं, वास्तु पुरुष के बारे में जब बात करते हैं, तो उस स्थान में जब हम जाके देखते हैं ना, अभी तो वास्तु है नहीं एक्चुअली, कहा जाए तो हम तो ऐसे में रहने लगे हैं. सो वास्तु को ऐसे देखा जाता था, हम तो ऐसे रह के भी उसमें भी वास्तु देख लेते. चलो कोई बात नहीं. ऐसे ऐसे स्थानों में लेट्स से देयर इज डार्कनेस इन योर हाउस. There are 5 rooms in your house. If I light up one candle in this room, will all the 5 rooms lighted up? No, only one room will light it. All right. So in order to light up all the 5, 5 you need 5, candles. right? 5 candles. So that is one kind of energy that is lighting up that place, that room, right? That is Yes. lighting up that room. One particular room, one particular candle, and it is lighting up the entire room. Correct. ग्राम देवता का स्वरूप अगर सरलता से समझना है, ऐसा ही है. फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया दे वर देयर. अलग अलग जगह पे अलग अलग देवताओं की पूजा हुई है और बहुत अच्छी घटनाएं हैं उसके साथ. सो आई विल शेयर यू विथ समडे. नाउ सो ये हो गया दिस पार्ट. व्हाट वाज द क्वेश्चन? आई डाइवर्टेड, सॉरी. No, my question was is that some energy only operate in some particular geographical location only? They can't operate in somewhere else. दे वेल सी, वैसे देखेंगे जैसे आपके ग्राम देवी या ग्राम देवता हो गए, सो दे आर लोकलाइट. हाँ, exactly. दे हैव ए पावर इन द लोकल एरिया. Local. अब जैसे हमारे वार्ड काउंसिलर्स होते हैं ना, Correct. they have a certain range or not? Then you go above them, then you go above them, then you see that वो And there is भी a very contradictory factor. For example, ग्राम देवता आप अगर बोल रहे हो कि उसी एरिया में काम करता है, बट वही आदमी जाके अमेरिका में वही ग्राम देवता को याद करके उसका काम करा देता है, तो वो भी ऑपरेट वहीं हो जाता है. तो क्यों नहीं ये होगा? कैसा है? ये तो देखो, हाँ. सो नाउ एक चीज समझना जरूरी है. If you have that kind of faith and belief kind of stuff that we are talking about, and आप वहां बैठ के अगर अपने ग्राम देवता को ध्यान करते हो, पहले देवता जो है, they are not bound to time and space, but they have been kept as the person who can take care of that area. Okay, but that does not mean that they are bound to that place only. Okay. फॉर एग्जांपल विवेकानंद का जो अमेरिका में भी जो हुआ रामकृष्ण, वो कहाँ थे और कहाँ जाके क्या मांगा, उधर उसी को दिखा, फिर ही गॉट द सॉल्यूशन. अब अमर जी, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जो तत्व होता है, द वन दैट इज वाइब्रेटिंग इन यू is also vibrating in me, and it is vibrating across every place, right? So if I can see, देखो हम क्या करते हैं ना, एक स्वरूप को देख के उसकी पूजा करते हैं, लेकिन स्वरूप के पीछे ऐसा चीज है जिसके ऊपर इट इज कमिंग अप ऑन दैट रायर, राइट? अब means what you are seeing this chair, right? But you are seeing this chair in what? The space is also surrounding the chair or not? Yes. But can you see the space? No. You don't see the space, you see the wall behind it. Correct. But we cannot see the space, but we are surrounded by space. Space is what? Space is also energy. So same kind of energy is available everywhere. It's all about in which belief system you are working. देखिए, बिना belief के तो work ही नहीं होता कई सारे चीजों पे. Can you go and write an exam and you don't have faith on what you are writing? You are just writing it out. Will it work? No, you'll fail हो जाओगे. फेल हो जाओगे. हालांकि आपको पता है, and still despite not knowing confidently what the answer is, you will write something else and come back, and when you see, Arey, I knew this answer, but why did I did this? So don't worry, I will talk about, आपने अच्छे चीज को छेड़ दिया है. I will talk about ग्राम देवी and ग्राम देवता. On that day I will define कि उनकी शक्तियों को कैसे एक जगह पे रखा जाता है, या तो उनकी शक्तियों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, but there is a source that is used through that. Okay, so I will decode that source in front of you as well, Thank you. because the entire session needs to be done on that. And you will understand so many beautiful things about that.
So thank you, Amarji, for bringing that up. Thank you. You have given a good topic to me for talk. I'm happy. Thank you. Thanks. Thank you so Thank much. you. Thank you, Amarji. Thank you, Amarji. Thank- Anubaji, please unmute yourself. Hello, good evening. Good evening, Anubhaji. How are you? I am okay. So before I ask anything, I have something to share with you first. Please go ahead. Why am I put in the spotlight? Is it because of some setting from my end? No, Yeah, not from your end. better now. Uh, so I don't know if you remember our conversation in Hyderabad, but I think I had told you about my first encounter with Kali's energies. Now that was, when I tried something spiritually. But much before that, when I didn't know meditations, I didn't know anything at all. And yeah, it was, a very, very tough time in my life. So I don't know, while sleeping, I used to get these dreams and these visions where Krishna would appear, and I'm just asking him why. That, why is this happening? And he would just smile and he would tell me to wait. This just happened twice. Okay. And after that, I would say for almost a year and a half, he just disappeared. He never appeared again. I would meditate. I obviously wanted to see him because he was the first one to have, appeared in my visions like that. When I'm not even meditating, I'm dreaming, I'm sleeping. And this is also in line with a statement that you had made once in one of your very, very early sessions that I had attended, that अगर कृष्णा कभी मिले ना उसको पकड़ लेना क्योंकि वो आएगा और वो कब भाग जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा. Okay, so I did something. Don't call me crazy. So I got this made. Okay. Can you see? Is it clear? Yeah, I can see that. Is it the face out there? Okay, Yeah. it's the face of Krishna. Okay. I got this done and I told him that now you're not running away. Now you're not going anywhere. So yeah, since I have gotten this done, again, 2-3 dreams he again appeared, 2-3 visions he again appeared, and these visions were very, very different from the starting ones. But again, he's disappeared again. But yeah, I just wanted to share this with you. Thank you. Now coming to the question. This Shivaratri, my father lost his first cousin. He was my uncle. And he's my father's first cousin. Now, when I got this news, I knew what was coming from my mother's end. And she said that now we have to stop celebrating Shivaratri because we lost someone on that day. And I just at the spur of the moment, it just came out of me that, no, I'm not stopping. Because maybe this is how you see it. The way I see it is because he departed on this day, it's very good for him. And I'm not stopping. And she was obviously not pleased with the answer. But later at the back of my mind, I had this thing that anyway, in the entire family's chart, there's, people keep saying we have Pitra Dosh, we have this and that. And then a soul is departed, even after knowing a little about spirituality. Now I still made that statement. So I wanted this clarified from you, that is my mother correct on this point, or should I continue celebrating? Okay. So what did you do actually? Did you celebrate it or you stopped? I definitely meditated, but I did not do any rituals. Okay. But I definitely meditated. I wasn't clear, so I wanted to ask before making any mistake. Got it. So now, Anuvaji, it is the celebration for Shiva, right? Who is the primordial, means beyond time and space. Death and birth happens in the realm of time and space. So can you bind someone who is beyond time and space in time and space? You cannot. लेकिन कौन से स्वरूप की पूजा कर रहे हो आप? Which kind of thing you are doing the
puja of. अगर आप ऐसे जैसे like the 5 faces of Shiva, okay, there is one face of Shiva which is Aghoreshwar, right? What is Aghoreshwar? Aghoreshwar means what exactly the statement that you said. How should I stop for this thing? Because he himself sits in the smashan. जो स्वयं स्मशान में बैठता हो उसको छूत अछूत की क्या लगी है? That's one thing. लेकिन अगर आप वो तांत्रिक विधि से पूजा करते हो तो, अगर आप सात्विक विधि से पूजा करते हो, जैसे पुष्प चढ़ाना, जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना और ये सब करना, ये सब किए क्या आप? नहीं. Did you do all these things? No. नहीं किए. That's absolutely fine because you should not. Okay, but you meditated. That's absolutely fine because meditation is not of this realm again. So celebration, can you? I ask one thing, Anuvaji. There are so many rules. Yes, you should follow that. But however, I have to ask one thing. Let's say throughout the day you are chanting Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, going on. And suddenly this happened and you stopped doing that. But surrounding you, there might be other people, those who are chanting the same thing. And they are chanting Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Will you block your ears also? No. Can you? Even if I try to, I can't do that. You cannot. So what happens is, anyways, it is going to be chanted and it is going to reach inside you. So whatever you see, whatever is chanted as a mansik roop, in a mansik way, whatever you are chanting, unko aisi koi bhi ye nahi lagta. Means these things don't touch to that space. I'm sorry. You might have seen like we have females are there who do 40 days sadhana. How can a female do a 40 days sadhana? Because some or other space, they have to stop it in between for 4 days or 5 days. Yeah, that's exactly where I was coming from. Right. So how to do that space? How to do that? So वहां पे आपने देखा होगा, मैं हर बार यही कहता हूं कि आप मानसिक रूप से कर लो. You don't touch the mala, you don't go and sit there, but मानसिक रूप से आप जाप कर सकते हो, क्योंकि मानसिक रूप का जाप कोई रोक नहीं सकता. Can you say that no, today somebody died in my house, so I will not even take the name of Shiva in my head, or take the name of Krishna in my head, or take the name of Durga in my head? Can you do that? You cannot. That might happen without even. Can you see? So if that is happening, like even without you knowing, means it is happening at a subconscious or a higher frequency level, right? Yeah. So अगर आप मानसिक रूप से कोई भी पूजा करते हो, वो कभी भी वर्जित नहीं है. ओके, सो आपने अगर शांति पूर्वक अपने साथ अपने आप बैठ के आपने जब ध्यान किया है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन. और आपने जैसे कहा, इट इज अ वेरी गुड डे. इससे बेटर दिन क्या हो सकता था जाने के लिए, राइट? सो अनुवाजी, it is not, you see, when you have power, it does not mean you should be fighting, right? If you have power, you should know how to use your powers. So आपने जब कभी भी देखो, अगर किसी ने कहा कि ऐसा मत करो, so shall I go and fight? No. ये उनकी हिसाब से हो सकता है, because they have been conditioned in that way. But in me, अगर मैं अपने मन में बैठ के अभी भी राम 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 बोलूं या शिव शिव बोलूं, how will you know? I am still connected with the divine. I am still doing the celebrations, but I am not showing it off outside. और वैसे भी अच्छा ही हुआ, शो ऑफ की चीज थी ही नहीं वो. अंतरात्मा से जो आवाज निकलती है, उससे शक्तिशाली आवाज कोई नहीं हो सकती. And you know it. Yes or no? Absolutely. So that's where, if you have done that, no problem with it. May you be blessed abundantly with him. And what a way you have found to bind Krishna. Thank you. Like Aparavji said, Aparavji actually wrote 5-6 sentences for that. But thank you. You have given a good idea. I think like people now will buy stickers and put it around themselves. No, this is permanent. I know, myself, like, but some people don't have the courage to do the permanent one. So what they will do is they will wrap around, like, at least for certain days, some stickers. Okay. So okay, one more, like in furtherance to this question, one more thing.
Yeah, please. So the reason, I told her that no, I'm not stopping is because, see, before I started speaking with you, I was under the impression that, when you're in your cycle, you can't just do anything at all. You can't even look at the god, you can't do this, you can't do that, you can't touch anything. And mentally, meditations, these concepts have just arrived. Now, every Durga Puja this happens, every Navratri this happens. Four times in a year it comes. Even if those are not my dates, my cycle will adjust itself. And Okay. I will not be able to do those rituals. Okay. Now, before meeting you, it used to bother me. Then I met you, you said you can do it mentally. And at the same time, I kind of accepted this fact that maybe she doesn't want that, all those 9 days to happen without any hindrance for me. So when she wants it, it'll happen. Okay. So Yeah, now you can. So I will give a way out to all the females in the room. That will become the most powerful days of their entire lives. Especially females who think they don't have the power and all those things. I will literally give another sadhana for the females for those specific days, so that they will become more powerful, because that is the most amazing cleansing process that you people go through. And when you are going through a cleansing process, the energy can be given to you. How many of you have gone to Kamakhya? What is that goddess? That goddess, it is said like she's always there in the bleeding phase, right? So how is it worship done to her? कभी सोचा है इस बारे में? तो एक ऐसी साधना है कामाख्या देवी की जो आप कर सकते हो in those specific days, and you will become the most powerful in those days. Now I think like we have more females in the room. Chalo, I will give that also. Keep it in the list now, so that you people don't think like you have left out something. You will be more powerful than any other person sitting in this room. So thank you, Anuvaji. So another session already, but I have to do that for females only, I believe. But surely, why not? If you are serious in your sadhana, I should not stop you from achieving your goals. You should not be stopped from getting those kind of energies or frequencies. It is, आपने जो कहा ना, मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्यों जानते हो? आपने कहा कि शायद उसे वो नहीं चाहती कि मैं करूं. मुझे ऐसे, मेरी माँ को ऐसे नहीं सुनना है कि वो कहे, कोई उसके बारे में ये कहे कि वो नहीं चाहती कि मैं ना करूं. मेरी माँ ऐसी नहीं है. She is not like that. I am telling you on your face. Might be all these days, all these years might have gone, but let me give a solution for that also, so that no one ever blames her again. Because I can take millions on me, but not even a single one on her. I cannot. So thank you, Anuvaji. So we will surely come up with that. I'll be on the lookout, because I will be posting that in the group when I'm doing that session. And you people are most welcome. And if you are literally really want to explore into that realm, why should I become a gateway where you are stopped? Let me open that door as well. So thank you, Anuvaji. Thank you for bringing that up. Thank you for binding Krishna. Thank you for bringing this powerful thing into this existence again. Because I never thought of sharing this part, but if that question has arrived, I believe she is ready to give that process to you all as well. So let's see how you people become the most magnificent and ferocious being in those spaces. Because wo Sarva Shaktiman hai, like absolute power. And when you do those, you will realize what kind of power is emitted by that. तो आसपास के लोगों को करंट ना लगे, बस उतना मैं सोच रहा हूँ. Okay. So thank you, Anuvaji. Thank you so much. This makes me very happy. I didn't know anything at all about this sadhana. I've heard about Kamakhya,
कुछ आइडिया No- नहीं था पर ये। Not only you see, none of this in the people in this room, they go, they see that goddess, but they don't understand that these kind of energies have been settled so that you people are not missed out. अरे स्वयं वो बैठ के पूजा होती है उसकी, आप लोग क्यों नहीं पूजा कर सकते? और उसकी पूजा में कैसा ये, you don't have any rules regulations for that, right? और बिल्कुल सात्विक रूप से बता दूंगा आपको, you don't have to run to, you don't have to go to any temple, you don't have to go any space. You sit down at your homes, you don't need anything absolutely. You just being you and doing what the chant that I'm going to give, you do that and you tell me what happens. Okay? So thank you, Anubaji. Thank you so much. Thank you, Anubaji. Prerna ji, please unmute yourself. Pranam Guruji. Pranam Prerna ji, how are you? I'm good, Guruji. I'm good. Thank you Okay. so much. Yeah. Please. So there are a few things that I definitely wanted to discuss. And first of all, I don't know, since the first session I joined yours and then I was continuously traveling. So I couldn't even attend Mahashivratri Puja. So maybe next year, I'm No just problem. hoping No problem. next year I'll be a part of that for sure. Sure. I have a very weird issue, Guruji. I have like never discussed with people, but just thinking like they will make fun of me. Okay. But I don't know how I'm a part of this family now, and Revti ji took me here, and I'm discussing this with you. And I think you are the only and you are the most right person for me to ask this question. So I will try my best. You will, because people call you Mahadev, so definitely you will. So since my childhood, Okay. I don't know, since that time I had this kind of, I started speaking or understanding things right from the age of like 2-3 years. I am extremely scared of snakes. Snakes? Huh. Okay. To an extent कि if I see a picture in a book और अगर टीवी पे भी आ रहा है तो I'll switch off my TV या फिर मैं बुक बंद कर देती हूँ. अगर कभी कुछ ऐसे सामने में आ गया, anything, beat any snake, I can't see it. I'll walk away or I'll switch it off or कुछ भी वो मैं नहीं देख सकती हूँ. I have this. Okay. और before my marriage, just because of my mother pushing me to do Shivratri, करो पूजा करो, मैं कर लेती थी. I used to fast, but temple जाकर के पूजा करना was something that I never did willingly. वो my mother used to push कि नहीं करो करना चाहिए, तो I used to do. शादी के बाद my in-laws place when I came, they said कि हमारे यहाँ शिवरात्रि की पूजा नहीं चलती है, नहीं करते हैं. My mother-in-law said कि अगर फास्ट करना है तो कर लो, बट पूजा करना पूरे तरीके से we don't do. तो मुझे तो ऐसे भी डर लगता था स्नेक से, तो मैंने, और वो कहीं से ना होते होते ऐसा हो गया कि अभी हालत ये है कि मैं महादेव की तरफ देख नहीं पाती हूँ. Okay. चलो. तो मतलब मैं इतनी बड़ी दुविधा में हूँ कि मैं आपको कैसे बताऊं. I went to Rishikesh where I met Revti ji. रेवती जी से मिली और फिर मैं यहाँ आपके पास पूछ रही हूँ. ये तो डेफिनेटली ये तो डिवाइन कनेक्शन है ही है, क्योंकि वहां पे मैंने रेवती जी को कहा था कि मैं यहाँ तक आ तो गई हूँ, बट पता नहीं कैसे मैं आ गई हूँ, क्योंकि आई एम लाइक एक्सट्रीमली स्केयर्ड ऑफ भोलेनाथ. मैं उनकी तरफ नहीं देख पाती हूँ, या तो वो पता नहीं वो स्नेक की वजह से नहीं देख पाती हूँ, या उनका वो भव्य रूप नहीं देख पाती हूँ, या क्या है. बट देयर इज समथिंग that just stops me. I'm so scared. मैं इतना ज्यादा डर जाती हूँ उनको देखने के बाद कि मतलब मुझे लगता है कि मैं उनके सामने खड़ी नहीं हो पाती हूँ. And I just move out. Done. Okay. तो ये मेरे बचपन से ना मुझे ये चीज जो है मैंने मन में अपने वो करके रखा हुआ था. मैंने किसी को बताया नहीं कि मुझे डर लगता है शिव मंदिर जाते हुए. No problem. तो मतलब घर में भी मैं पूजा करती हूँ. मैं जो डेली की पूजा पाठ जो थोड़ा बहुत करना आता है वैसे कर लेती हूँ.
बट मुझे लगता है जितने मन से मैं दूसरे भगवान की पूजा करती हूँ ना, महादेव के सामने आते ही मेरी मतलब मैं खड़ी भी नहीं हो पाती, मैं देख ही नहीं पाती हूँ उस तरफ. Okay, that's a beautiful connection I see now. Okay, chalo. And that to me, being here in your, being a part of your family now. We will make sure this changes forever. That will happen for sure, so don't worry. But we will take steps. Okay, so what do you want? I want. I got the problem. So what do you want? A solution. What is a solution that अगर आपको मिल गया तो आपको लगेगा कि नहीं, okay, so now I'm free of it. So what is exactly that you are seeking? I'll guide you in that way. Blessings, because I always feel कि शायद अभी इस जन्म का तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मेरे से कुछ गलती हुई हो, बट शायद कुछ मेरे पिछले जन्म के ऐसे कर्म हैं जो सही नहीं थे, और शायद शिव जी को मेरे ऊपर शायद उनकी कृपा नहीं हो पा रही है. चलो, अगर थी भी तो रेवती जी के वजह से शायद वो भी दूर हो जाए, बस देखते हैं. हाँ, बस इसलिए मैंने आपको कहा कि मैंने पहले रेवती जी से पूछा कि बहुत सिली है, मैं पूछूं नहीं पूछूं. नहीं. तो उन्होंने कहा कि not नहीं. a silly question. It might open up a new door for people because you have taken that thing and now you're asking here. But there are so many people, those who are fearful of so many things. But a very typical thing that everybody came to know is somebody can be scared of Shiva. Mahadev se koi डरता है. चलो, कोई बात नहीं. Absolutely, if you look at his image, especially the people, those who have never been introduced to him as a god in the childhood, and suddenly somebody brings that picture of that personality in front of you, nobody will accept him as a god. Yes or no? तो दिखने में भी ऐसा है. हाँ, मतलब मैं ये बता रही कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, माय पेरेंट्स साइड, मतलब मेरे घर में बहुत पूजा पाठ होती है, बहुत ज्यादा. तो ऐसा नहीं था कि मैंने देखा नहीं था, मैंने देखा था, होते हुए देखा था, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी. हाँ, नहीं, that's okay. I'm just giving a way, like कैसे लोग, if you उनका स्वरूप को देखो तो स्वरूप से कोई ना कोई डर ही जाएगा. ओके, जैसे वो शादी करने गए तो मैनावती देख के वही खुद बेहोश हो गई थी वहां पे, राइट? तो चलो, दैट्स अनदर स्टोरी. Do you want to see him without fear? That's it I'm asking. Yes, I definitely want to see. Minus the snakes or with the snakes? Minus the snakes, क्योंकि अभी तो डर तो अभी भी लगता है. If you try to see him minus the snakes, you will always still have a fear lurking within you. You have to overcome this part. Yeah. So as I'm talking to case, you, then, yes, you are and talking still to me. I'm still feeling goosebumps when I just like imagine or no problem. होना ही चाहिए. That's not an issue. But as I'm saying, if you still continue to try to see him without those snakes, then what happens, you can see him. It's not a big deal. You will see him. You will not have that fear anymore. But I want to, what is a good doctor? A good doctor is someone who kills it from the root cause itself, not just the outer boundaries. If we keep on cleaning up the outer boundaries, it's of no use. I will, you just send me a message. I will give you a chanting. I don't want to give that chanting in the group right now because no other people have that kind of fear here. I'll just give you a chanting, okay? You do those chanting and you let me know what happened. Sure. Okay? Yeah. For sure, the first thing that you will be very happy that slowly and suddenly you will lose that fear. And once you lose that fear, Shiva appear. Yeah. So there is a chanting. I will give you specifically, just keep me a message, okay? In my personal window, you just type hi or you just type your name because I might not having a number saved of yours. So you just type your name. I will suggest something and I will tell you which date to start and which day and how you have to do that. I will give you very specific and small things. Just do it. And we will be waiting to listen your story when you say, wow, finally I was able to look at him. And it's not that I only looked at him, he looked back. Yeah.
I would love to. Okay. Sure, yeah. So But Prerna ji, why is that? I wanted to know the reason. देखो, if I go on, Because we this is can not go normal. back. You see, we can go back to your past life, see what has happened, why this fear is lurking, and is it exactly because of the last path, or there have been ऐसा कोई कभी कभी क्या होता है ना प्रेरणा जी, like we do some kind of mistakes because of which we cannot sustain certain kind of gods. हम उसके सामने जा नहीं सकते. जैसे कि आप देख लो भूत प्रेत जो होते हैं, they cannot withstand before Hanuman. Why? Because they cannot handle that kind of energy. Now when it comes to you, you are not able to handle the especially energies that is created by the snakes. So इसका आपके जीवन के साथ बहुत गहरा रिश्ता हो सकता है. Or else generally people have fear, but not kind of fear that you have. इतना ज्यादा तो किसी को डर नहीं हुआ होगा कि because they are not even able to see the copper snakes. Yeah. Right? कॉपर स्नेक तो छोड़ दो, मुझे लगता है मैं अगर हाथ भी ऐसे करूं तो भी आप नो इश्यूज प्रेरणा जी. इफ दिस हैज बीन अ बाउंड्री फॉर यू, लेट्स ब्रेक दैट. Okay, so I will specifically guide you through that. So you please do the chantings and you let me know how it works, and we will take the next step. And slowly I'm quite confident that you will see Shiva. You won't have that issue. Okay. Thank you so much, Guruji. Thank you. Thank you, Prerna ji. Thank you so much. Thank you, Prerna ji. Janesh ji, please unmute yourself. प्रणाम गुरुदेव. प्रणाम जनेश जी. और आपका रोना बंद हुआ कि नहीं? मैं तो रोने ही वाला हूँ. ए देखो. गुरुजी, जब आपने ठान लिया है कि सब साफ करना है तो कचरा तो निकालना ही पड़ेगा ना गुरुजी. ये कचरा और जितना मिथ्या अहंकार जाएगा उसका दुख तो होएगा ही. But I believe on Shivratri something happened to you. Yes. What happened? I don't know Because how you to put it see, in words. जनेश जी, मैं एक चीज कहता था. देखिए, some people are क्या कहते हैं उसे, लोभी इंसान को क्या कहते हो इंग्लिश में यार? ग्रीडी नहीं, और एक भी वर्ड है उसके ऊपर. Can anybody help me with that? Miser. हाँ, miser. माइजर मतलब कंजूस है ना. So I have a good family, but they are spiritual misers. They never share it. They think like if they share it, it will go away. ऐसा नहीं है गुरुजी. एटलीस्ट मैं आपके बारे में नहीं बोलूं, क्योंकि आप तो कैसे भी अभी बोलने वाले हो और मैं आपको बिना बोले छोड़ने वाला नहीं हूं. लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं. और मुझे लगता है कि आई हैव इनफ, उनके ऊपर मेरा हक है, ये बोल सकता हूं मैं. आई हैव इनफ ऑन देम. तो स्पिरिचुअल माइजर्स जागो थोड़ा. ओके, सो जनेश जी, वी विल डील विद देम एनीवेज लेटर. आप बोलो. गुरुजी, कई सालों से ध्यान का अनुभव बोलो या कुछ ज्ञान बोलो, सब यहाँ चलते गया. ये पहला अवसर था. मतलब मैंने जब ध्यान किया है, चक्रों पे ध्यान करता हूँ तो उसकी अनुभूति ये वो सब होता था. ये पहला अवसर था जब मुझे अनुभूति से बाहर आने के बाद अनुभूति की डेफिनेशन करना समझा ही नहीं. मतलब मेरे लिए वो अनुभूति में सब कुछ तो भी एक ऐसा क्या बोलते, बहुत सारे पहाड़ है, नदी नाले है, सब है, और एक बार उसके ऊपर से बुलडोजर होके ऐसे समतल हो गया. अभी उसका कोई अस्तित्व नहीं है. ऐसा हो गया गुरुजी. I could feel each and every cell of my body has just become nullified.
and also it was energized. So I could not figure out कि ये क्या है, and the beauty was inclination नहीं आया कि मेरे को जानना है. I was happy and बस ऐसा एक स्थिर हो गया मैं. मुझे ऐसा भी नहीं पता लगा या जानने की भी उत्कंठा नहीं हुई. एक सहज स्वभाव. तो मैं खुद दूसरे दिन तो सोच रहा था कि ये मेरा स्वभाव से विरुद्ध मेरी सोच हो गई या मेरा मन चल रहा है और मैं खुश हूं. मैं देख रहा हूं और मैं खुश हूं. एंड आई डोंट नो. बस गुरुजी कुछ मतलब अभी भी वो श्री शाम शिवाय नमः, श्री शाम शिवाय नमः अपने आप चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है. मुझे नहीं पता क्यों चल रहा है, क्योंकि वो तो खाली उस समय के लिए साधना थी ना. मैं सोच रहा हूँ लेकिन चल रहा है. मुझे आई जस्ट डोंट नो बस. एंड आई एम हैप्पी दैट आई डोंट नो. फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ within me, my inside ahankar is happy of knowing, of not That knowing. does not know. ये मतलब बहुत विचित्र परिस्थिति है. मैं एनालाइज करना ही नहीं चाहता हूँ, ऐसा हो गया है आज तक. मतलब एक मानवीय स्वभाव है कि खुद की अनुभूति को, चाहे वो 5 सेंसेस की हो या इंटरनल सेंसेस की हो, वो कहीं ना कहीं उसको कैटेगराइज करके उसको संजो के रखता है ताकि वो उसको वापस रिकॉल करके उसके ऊपर काम कर सके. पता ही नहीं गुरुजी, समझा ही नहीं. ये वो हमने एक सेशन किया था ना जनेश जी, एंड द लाइट एंडेड. यस यस. और ऐसे हमारे ग्रुप में और भी कई सारे लोग हैं जिनके लिए वो मैं बोलना चाहूंगा, बट आई डोंट वांट. एंड लाइट एंड होके अंधकार के अंदर भी लाइट का अस्तित्व या विदाउट अस्तित्व अहंकार भी उतना ही बढ़िया है जितनी लाइट बढ़िया है. और कहीं पे भी कोई फर्क ही नहीं है. मतलब उसके बाद कुछ ऐसे विचार मन में प्रतिपादित हो गए जिसको मैं खुद आश्चर्य में हूं कि ये क्या हो रहा है. और ब्यूटी मेरे को उसको एनालाइज करना पसंद नहीं आ रहा है. जो आना, जो एक मानवीय स्वभाव है, मूलभूत स्वभाव है, वहां से वो क्या बोलते, वो स्थापना विस्थापित हो गई. स्थापना विस्थापित हो गई. स्थापना और विस्थापित. थैंक यू. और ये नहीं गुरुजी, माध्यम बोलो जो भी बोलो, लेकिन आपकी कृपा कोई न कोई जन्म में मैंने बहुत पुण्य किया रहेगा, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं. and everyone out there जब वो थे, I gave them something called as the Nagkesar in their hands, right? Yes. And when you are holding that in your hand, what happened to all of you? One specific thing must have happened. एक है ऊर्जा, means the heat energy that was there. Second thing, how many of you could feel the beating of a heart? It was like very subtle, boop, boop, boop. It's going on in your hand. तो क्या था? गुरुजी, हरि भाई मुझे पूछे भाई ये नागकेसर होता क्या है? किसी दिन नागकेसर की कहानी बताता हुआ, नागकेसर होता क्या है और आपके उसके हृदय का बीटिंग, why were you able to experience that beating in your hands? वो कोई साधारण वस्तु नहीं है और शायद आपने आज तक सुना भी नहीं होगा उसके बारे में. And the beating,
और जब आप उसको हाथ में पकड़ रहे थे, हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दैट इट स्टार्टेड मूविंग इन योर हैंड? मानो वो चलने लगा है आपके हाथ में। और जब आप मंत्र उसके साथ करते हुए, व्हेन यू स्टार्टेड चैंटिंग अलोंग विद दैट, व्हाट हैपेंड? जनेश जी, ऐसी चीजें ये गुप्त प्रयोग में लगती हैं, और अगर शिवरात्रि के दिन आप अपने हाथों से जाप करके इस चीज को शिव के ऊपर चढ़ाते हो, याद है यमराज ने क्या कहा था? हाँ, तो यमराज का कहना था, लाइक इवन इट इज स्टेटेड लाइक इफ somebody is putting this on शिवरात्रि, on शिवलिंग, खुश हो जाओ, you are not going anywhere else. गुरुजी, नाग केसर जब ये मैंने हाथ में पकड़ा तो देयर वाज a different kind of heat which was propagating from my somewhere between my neck and back towards bottom, and it was going towards my feet, and that heat was a pleasant heat, and I could feel a sensation which was continuously going and touching the ground and moving out. I don't know what it अब was. बताता हूँ जनेश जी, ये ऊर्जा क्या है और कैसे है, 2 मिनट समय में बता देता हूँ। हरि भाई, आपने पूछा था कि नाग केसर क्या होता है ना? इफ यू ब्रेक दैट वर्ड, व्हाट डू यू गेट? नाग एंड केसर? नहीं, नाग के केसर, केस, ओ नहीं, नाग नाग के के लास्ट वर्ड सर, सर, किसका सर? नाग के सर, नाग, किसके सर चढ़ाया? नाग का सर, ओ, नागों के सर को आपने शिव के ऊपर चढ़ा दिया। ओ, तो किसका सर लेके घूम रहे थे हाथ में आप? नाउ डिड यू अंडरस्टूड व्हाई दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर? वो कोई मामूली वस्तु नहीं है। जो नाग योनि है, ये बीज वहां से लाया गया था, उसका रोपण गुप्त रूप से हुआ है, उसका प्रयोजन किसी को नहीं पता। अब पता नहीं हम क्यों करवा दिया आपसे। और गुरुजी, महाराष्ट्र के अंदर ये जो पान वाले रहते हैं ना, जब पान का बीड़ा बनाते हैं तो पान का बीड़ा फोल्ड करके उसमें नाग केसर ही दबाते हैं। हाँ, जनरली क्लॉव लगाते हैं या तो हाँ, नाग केसर, लेकिन नॉर्थ में वो क्लव जो लगाते हैं। देखो जनेश जी, वहां जो पान में लगाते हैं ना, उसकी विधि अलग विधि है एक्चुअली। वो क्यों हाँ, लगाया जाता है, उसका अगर स्रोत आपको मालूम पड़ेगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये किसी गुरु परंपरा से ही शुरू होके यहाँ तक पहुंची है। सिर्फ महाराष्ट्र में मैंने देखा है वही पान का बीड़ा जब आप पान वाले से लेते हो वो नाग केसर लगाता है। बाकी मैं वाराणसी गया, गुजरात कहीं में, नहीं है, सब कहीं जगह पे नहीं है, लौंग लगाते। कहीं नहीं है। तो इसका मतलब जनेश जी, कोई वहां पे ऐसा हुआ है जिसने ये पद्धति बताई है। उसके दूसरे जो मेडिसिनल पर्पसेस है फॉर योरसेल्फ, यस, वो तो बहुत सारे हैं। अगर आप आयुर्वेद तंत्र के अंदर जाओगे, उसकी व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी है। लेकिन आपके समझने के लिए, शिवरात्रि के दिन अगर आप मुट्ठी भर, मतलब कितने नागों को आपने हाथ में पकड़ा हुआ था? क्या कहा जाता है, अगर आपके जीवन में स्थिति सही नहीं है, इफ यू आर नॉट हैविंग ए बैलेंस इन योर लाइफ, गो पुट ए कॉपर स्नेक ऑन द शिवलिंग, पुट ए सिल्वर शिव के ऊपर एक चांदी का सर्प चढ़ा दो, सर्प की पूजा करा दो, सर्प को दूध पिला दो। ये सब सुना है, नहीं सुना है आपने? एक मुट्ठी में कितने पकड़े थे आप? कई सारे। कितने जन्मों के धो दिए आप लोग? Even what looks like the minutest thing that we do might be the biggest of the thing that even it is not known by the world. तो जो भी पद्धतियां बताई जाती है, छोटा मत समझना उसे।
in your doing, what you all did was something. And now the people who were watching it online, they say, but we did not. Next Shivratri is coming. And if you cannot wait till next Shivratri, March 20th is another Shivratri. Yes. So Masik Shivratri 20 तारीख को आ रहा है. And the best part is you can get it on Amazon also. All this thing is available online. So if you really want to do that, don't worry, you have not lost anything. You can get the same thing, do the same job, and put it on Shiva. और गुरुजी नाग केसर तो अपने गरम मसाले का एक अहिगम अंग है, क्योंकि हर गरम मसाले में नाग हर जगह पे उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता जनेश जी. हाँ, खाली गरम कई सारे फूड प्रोडक्ट में उसका वर्जित है. इसीलिए मैं कहता हूँ उसके जो व्याख्या है ना, अगर आप आयुर्वेद तंत्र में पढ़ोगे तब जाके आपको पता चलेगा उसके बारे में. सही बात. बट ये तो लिखे हुए चीजें हैं. संतोषी जी, सो डोंट वरी. अगर आपने पहले जाप कर लिया है और वो कहीं नहीं जा रहा, दिस इज एन एडिशनल प्रोसेस दैट वाज डन. यू नीड नॉट फास्ट ऑन दैट डे. शिवरात्रि के दिन सिर्फ हाथ में मुट्ठी भर के लो. अगर इफ पॉसिबल डू इट विथ योर फैमिली. एक मुट्ठी भर, 1 handful of, do the chanting, चढ़ा दो. It is good for all of us. It is equivalent to, हरि भाई, एक जो दाना है ना उसका जनेश जी, एक जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि एक दाना is equivalent to you putting a golden snake on the head of Shiva. एक दाना एक स्वर्ण सर्प के जैसा है और आप मुट्ठी भर लेके बैठे थे. कई जन्मों के अज्ञान सर्प दोष निकल गए. अब now why I was smiling when Prerna ji was asking me the question is, if she could have done that in that time. हो गया रहता. That would have been an amazing space. But we will try, Prerna ji, we will try to get you so much amazed by that time that you are ready by that March 20th. नहीं हुआ, we will wait for another month. हर महीने आएगा शिवरात्रि और आप वो प्रयोग करोगे. And we will do with your own hand and you will see what happens. Okay? So Janesh ji, look. So अब पता चला नाग केसर क्या है. और हरि भाई is so happy now that, but he missed it what I said. Hari bhai, one single piece of it is equivalent to a golden nag given or kept on Shiva. Oh. तो कितने दिए? एक बीज एक स्वर्ण सर्प के हिसाब से है. और स्वर्ण सर्प is not only I'm talking about gold as a metal. मैं स्वर्ण नाग की बात कर रहा हूं. स्वर्ण नाग पता है आपको? It will be absolutely like gold, very rare. वैसे चीजों को अगर आप शिव के ऊपर चढ़ाओगे, so thank you Hari bhai and Lavanya ji for searching it around and bringing it out, and because of you all these people were able to do the process. क्योंकि मैंने जब कहा हरि भाई लेके आना है, I don't know where you get it from. Because I didn't wanted to lose that opportunity for all of us. And you might have seen, I believe like many of you were closing your eyes and doing the chanting. But if you can go now and watch it on the recorded version, while you were chanting what I was doing. So if you see that, you will realize exactly what kind of energy was being played out there. Okay? So Janesh ji, जिसको जलना था वो जल गया, जिसको आना था वो आ गया. हमने एक चीज कहा था ना कि many of the people might have also gone, like while sitting there, they must have become very restless while doing the process initially. Very restless. किसी का पैर पकड़ लिया, किसी का कमर पकड़ लिया. They say, why I am feeling like this here? There is too much of heat around.
ये हुआ ना, काल पुरुष नहीं तो जलता कैसे? प्रोसेस वाज काल पुरुष दहना। अगर आप इजीली बैठ के जल गया तो क्या पता चलेगा आपको? रीजन तो वही है ना, आपको तो यू शुड एक्सपीरियंस दैट विद इन यू, दैट इट इज बीइंग बर्न्ट। होना जरूरी था ना। यू गॉट व्हाई यू आर अनकंफर्टेबल, why you are having so like अरे ऐसा क्यों हो रहा है? I want to do it, I want to do it. You were like literally struggling to do that process. And that's how it works. अगर मैं पहले बोल दिया होता तो आधे लोग वहां से उठ के चले गए होते. See, all the processes have a specific kind of reaction that will happen if you do that process. But I'm so happy that you people didn't give up. So thank you, everyone. So Janesh ji, thank you so much for sharing and not being a miser anyways. Dhanyawad. Thank you. Thank you, Janesh ji. Thank you so much. Yeah, Kamlinder ji, please unmute yourself. प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम कमलेंद्र जी। गुरुदेव, वो मैंने एक प्रश्न किया था 3 मुखी रुद्राक्ष का। ओके। तो क्या उसको गृहस्थ लोग पहन सकते हैं, रख सकते हैं? 3 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल पहना जा सकता है, क्योंकि वो तीनों देवताओं को प्रतीक होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। ओके। लेकिन किस कारण से धारण करना चाहते हैं वो बता दो मुझे आप। नहीं, मेरे पास में तो आए हैं नेपाल से थोड़े से बीड्स, तो मैं क्या इसलिए you can wear it, no problem. Okay. Then the next thing you have asked is like whether you can do it at 54, right? Yeah, मेरे पास में 54 की 50 माला बना दो क्या? हाँ। वही बोल रहे हो ना आप? Yes. तो एक काम करो, अगर आपके पास पूरे के पूरे 3 मुखी नहीं मिल रहे तो उसके साथ 5 मुखी जोड़ दो। अच्छा। 54 ये 54 वो। Okay. 54 of this, 54 of that. Okay. ठीक है? So make it 108. तो बड़ी लंबी हो जाएगी गुरुदेव, इस साइज के हैं वो। ओके, अगर बड़े साइजेस के यू कैन रैप इट 2 times और 3 times, नो प्रॉब्लम। ओके। लेकिन अगर साधना के समय आप वो पहनते हो बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, ठीक है। कोई भी लक्ष्मी की साधना हो, कोई भी नारायण की साधना हो, कोई भी शिव की साधना हो, कहीं पे भी त्रिदेवों की साधनाएं होती है, तो वो समय में आप बिल्कुल पहनना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। ओके, ठीक है। लेकिन वही कर देना, अगर माला लंबी हो जा रही है जस्ट रैप इट अराउंड 2-3 times, नो प्रॉब्लम। ओके। अच्छा, गुरुदेव एक प्रश्न ऐसा है कि जैसे कभी स्थितियां ऐसी बन जाती है कि मकान में जो है टेम्पल जैसे ईस्ट फेसिंग आपने रख दिया, अब ईश्वर तो ईस्ट फेसिंग हो गए, लेकिन अब आप जब पूजा कर रहे हैं या तो वेस्ट फेसिंग कर रहे हैं या कोई और डायरेक्शन में बैठ के कर रहे हैं, तो उस समय वो उनकी पूजा मतलब हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो क्या उसका रहेगा? कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आपका मंदिर है, तो देवता का जो फेस है, दैट शुड बी फेसिंग वेस्ट, यू शुड बी लुकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट एंड डूइंग द पूजा। सेकंड बेस्ट वुड बी यू लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। अगर ईशान कोण तो परफेक्टली वही आएगा ना, नॉर्थ ईस्ट। अगर वो जगह है तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं है, नियम से वर्जित हो गया, तो क्या करो, पूजा करने के समय तो पूजा तो कर दो। अगर जनरली वैसा नहीं करना चाहिए, बट अभी अकाल है नियम नास्ति कहते हैं कि जब अकाल आता है तो कोई नियम लागू नहीं होता, जो मिले खा लो, वैसा है। तो ऐसे सिचुएशन में व्हेन देयर इज नो अदर ऑप्शन टू डू दैट, वो क्या करोगे फिर? ऐसे मतलब देयर इज नो, ऐसा जगह ही नहीं है जहां पे आप। और बड़ी दुख की बात है कमलेंद्र जी, आजकल लोग अपने लिए जगह बना लेते हैं, भगवान के लिए जगह नहीं रखते। पहले अपना बेडरूम सेट हुआ कि नहीं देख लेते हैं, भगवान चाहे लटके रहे दीवार पे। बिल्कुल सही है। सो ये तो बट है, कली काल है, ऐसा ही होगा। और ऐसा भी हो गया है कि वी डोंट हैव इनफ स्पेस इन आवर रूम्स राइट नाउ। देखो, जिसने आपको सब कुछ दिया, अगर आप उसको आदर सत्कार नहीं करोगे तो क्या फायदा है उसका? तो अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है जहां पे कि आपके देवता का जो है मुख वो पश्चिम की तरफ है और आप पूर्व की तरफ बैठे हो, सॉरी
उनका मुख पूरब की तरफ है, आप पश्चिम की तरफ देख के पूजा कर रहे हो, यही है ना? ओके, इसके लिए एक काट है, देयर इज अ वे आउट ऑफ इट। जी। कुशा होती है ना, कुशा, अगर आप कुशा का आसन इस्तेमाल करते हो, एक काट है उसका। ओके। अगर आपके पास कुशा का आसन नहीं है, अगर आप एक कुशा अपने आसन के नीचे दबा के उसको करते हो, चल जाएगा। ये कौन से दिशा के लिए हो गया? ये पूर्व और पश्चिम दिशा के लिए हो गया। अब कई सारे जगह पे ऐसे भी सिचुएशन आ जाते हैं वेयर द गॉड्स एंड गॉडेसेस आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। अगर वो साउथ के तरफ देख रहे हैं, ओके, आप किस तरफ फेस करके बैठे फिर? नॉर्थ हो गया। नॉर्थ हो गया, आपका डायरेक्शन सही हो गया, लेकिन नॉर्थ जो डायरेक्शन तो वो सेट हो गया बिकॉज यू आर लुकिंग टुवर्ड्स दैट, लेकिन वो देवी देवता का मुख जो है वो गलत डायरेक्शन हो गया। साउथ डायरेक्शन जो है वो काली का और यम का है डायरेक्शन है। अब अगर आपके गृह देवी देवता उनके तरफ देख रहे हैं तो आपके घर में क्या होगा? समस्या ही आएगी, राइट? आप एक बात बताओ, अभी हरि भाई रिसेंटली could find that out, that good that he has not taken. अगर there are other people those who are suffering from that issue also. Now ऐसा अगर आपके घर के सामने एक क्रिमेशन ग्राउंड है, आप वो घर लोगे क्या? नहीं लोगे ना, बिल्कुल नहीं। फिर आपके देवी देवता का मुख अगर उस तरफ करके रखे तो नहीं रखना चाहिए। सो ट्राई योर बेस्ट, अगर नहीं हुआ तो छोटा सा जगह बना दो ना जहां पे उनका मुख सही दिशा की तरफ हो। और दूसरा चीज, देर आर मेनी अदर वेज टू डू दैट। वास्तु के हिसाब से बहुत कुछ बदल सकते हो आप। देर आर गुड पीपल इन द रूम, यू कैन आस्क देम, दे विल हेल्प यू विद दैट। एक चीज जरूर करना, आपका गृह का जो सेंटर है उसको बिल्कुल पहले फाइंड आउट करो, क्योंकि हम जब वास्तु के हिसाब से लाइन बनाते हैं ना, सो सिर्फ 4 दिशा नहीं होते, 16 दिशाएं होती है उसके अंदर। राइट अपाराव जी? एक दिशा नहीं होके 16 दिशाओं के ऊपर हम लाइन काटते हैं। तो जब 16 दिशाओं के हिसाब से हम देखेंगे, द सेंटर ऑफ द हाउस, जिसे आप ब्रह्म स्थान कह सकते हो, ऊर्जा का स्तर कह सकते हो, उस जगह से वास्तु का कैलकुलेशन होता है, ना कि आपका घर का दीवार के डोर के हिसाब से। अगर आप उस जगह को स्वच्छ करके रख सके, उस जगह के हिसाब से अगर एनर्जाइज कर सके, दैट एनर्जी विल डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट योर एंटायर हाउस। सो फाइंड दैट आउट कि आपका घर का वो सेंटर कौन सा जगह पे है। और कई सारे लोग उसको करते भी हैं, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दैट। कैसे देखोगे? मेजर द लेंथ एंड विड्थ, जहां पे वो क्रॉस हो रहा है दैट इज द सेंटर। बिल्कुल। सो दैट वे यू कैन डू दैट। लेकिन अभी काली की पूजा करते हो, बिल्कुल साउथ की तरफ करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैरवों की पूजा चल जाएगा, उस तरफ मुख करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितने भी सात्विक और सौम्य देवी देवता हैं, उनका मुख उस तरफ मत करो। तो इतना कर सकते हो आप। और इनकी पोजीशनिंग भी एक उस पर रहती है ना, जैसे गणेश जी, क्योंकि अदरवाइज क्या है, वो इनका भी वो पोजीशनिंग भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते मंदिर के अंदर। ओके, पोजीशनिंग के हिसाब से कहाँ किधर रखना है ये पूछ रहे हो आप? जी 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 जी, मतलब जैसे देखो, अब तक तो टिल रिसेंटली वी टॉक्ड अबाउट कि पूजा में किसकी पूजा पहले होनी चाहिए, किस स्वरूप की होनी चाहिए। तब तक तो हमको पता भी नहीं था, एंड वी वर स्टिल इन अ डायलेमा। I light up the candle, I light up the diya, and I'm thinking, shall I take it to Ganesh first or to my Ishtadev first? अगर उधर ले गया तो आई एम थिंकिंग लाइक गणेश को बुरा लग गया तो, इफ आई एम टेकिंग टू गणेश एंड आई एम थिंकिंग लाइक इष्टदेव का गुस्सा हो गया तो, यू सी देयर वाज अ डायलेमा, बट देयर इज नो डायलेमा, देयर इज अ प्रेस्क्राइब्ड वे ऑफ डूइंग इट। अगर प्रेस्क्राइब्ड वे ऑफ डूइंग इट है, सो व्हाई डोंट यू अरेंज योर डेटीज इन सच अ वे सो दैट आपकी पूजा एक लाइन से चली जाए? That would be much easier. You will not forget किसकी पूजा पहले होनी चाहिए। दूसरा, in a series you will complete the entire process. आसानी से हो जाएगा। So no problem with that at all. Okay.
आराम से कर सकते हो। और वैसे भी अगर ये सारे चीजें नहीं होती हैं, बाध्यता से उस तरफ पूजा करना ही पड़ता है। कैसे भी एट द एंड ऑफ द पूजा आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हो वो तो और है। अपना जो इश्यू है वो बता सकते हो कि इस कारण हेतु आपको मैंने इस तरफ के मुख में बिठाया है, उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन फिर भी आपका कृपा दृष्टि मुझ पे बनी रहे। यू कैन डू दैट। वो मार्जिन हो सकता है, ठीक है, तो किया जा सकता है। और जैसे मैंने बताया, अगर कुश का आसन है, नो प्रॉब्लम। और मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि कुश के आसन के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। अरे कुश का आसन बना ही गया है ऊपर बैठने के लिए, ठीक है। चलिए, जी धन्यवाद। Thank you, Kamlender ji. Aditya ji, please unmute yourself. हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरे दो सवाल है महादेव। एक, अभी जो हम लोग एनर्जीज के बारे में बोल रहे थे, लोकलाइट गॉड्स के लोकलाइट एनर्जीज और उसका एक एरिया तक उसका असर रहता है, तो क्या शक्तिपीठों में जो भैरव के भैरव जहाँ पे स्थापित किए गए हैं, तो उनकी भी अलग अलग एनर्जीज है क्या? हर एक भैरव की एनर्जी अलग है? बिल्कुल, नहीं तो अलग अलग स्वरूप क्यों है, एक ही नाम से होते थे ना वो। इसीलिए ओके। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि आपने उस दिन बताया था कि ये 21st जो था वो राधा कृष्ण का की शादी उस टाइम हुआ था, तो ये स्टोरी एक्चुअली आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस स्टोरी महादेव। इफ टाइम परमिट्स कैन यू प्लीज टेल? अच्छा, राधा कृष्ण की विवाह की कहानी। हाँ, ये तो कभी सुना नहीं था कि उनका विवाह होता। एज पर माय नॉलेज आई डोंट नो। हाँ, तो मैं सुनना चाहती हूँ। अभी तो सीरियल में ऐसे दिखाया जा रहा है कि विधिवत शादी हुई थी, लेकिन विधिवत शादी नहीं हुई थी, वो गंधर्व विवाह के स्वरूप में हुआ था। और वो कब हुआ था? होली से कुछ दिन पहले ही हुआ था। यू सी नाउ होली विल बी कमिंग। ओके, वो तिथि ऐसे ही बनती है। तो बड़ी सुंदर कहानी है एक्चुअली उसकी। एक बार कृष्ण आने में देर होता है और राधा रूठ जाती है, और तभी क्या होता है, उसकी और एक सहेली वहां से हंसते हुए भाग के हुए आती है। और तब राधा उसको पूछती है कि तुम कहाँ थे? तो वो कहती है कि मैं कृष्ण के साथ थी। अच्छा, कृष्ण क्या कर रहा है यहाँ नहीं आके? नहीं नहीं, वहां बैठ के और किसी के साथ बात कर रहा है। तो राधा को और गुस्सा आता है। ओके, सो इट इज सेड। अब देखो, ये सारी लीलाएं हैं। फिर आपने राधा का मान के बारे में सुना होगा, जो अभिमान करके बैठी थी राधा। एक बार नहीं हुआ है, 2 बार हुआ है। एक की व्याख्या सब पढ़ते हैं, उसके बारे में बहुत सारे गाने भी हैं, जो ऐसे गाने मेरे पास अभी नहीं है। और एल्स इफ आई सिंग दैट सॉन्ग, इट इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, कि राधा को कैसे गुस्सा आता है और कृष्ण उसे कैसे मनाते हैं। देयर इज एंटायर सॉन्ग फॉर दैट। इस जगह पे तब कृष्ण देर से आके पहुंचता है वहां पे। देन राधा वहां बैठी हुई है एंड पूरे मान में बैठी हुई है कि तू वाई इट वाज सो लेट। एंड कृष्ण एज यूजुअल ही सेड, काम था। अरे मुझे थोड़ा काम रह गया, सो आई वाज देयर। राधा को पता है, अच्छा कौन सा काम था? व्हाट काइंड ऑफ वर्क डिड यू हैड? नहीं नहीं, वो एक गाय कहीं चली गई थी। मैं जाके ढूंढने गया था। राधा कही कि वो गाय मिली क्या? तो कृष्ण बोला, नहीं अभी तक तो नहीं मिली। कैसे मिलेगी, वो यहाँ आ गई है। Now you understanding what she is saying? तो कृष्ण को समझ में आता है कि अच्छा तो ये है क्या। Then Krishna says, oh my dear, I'm sorry for that and all those. शुरू होता है। राधा नहीं सुनती, तो कहते मेरे लिए तू ही सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा सर्वश्रेष्ठ है, तो आज शादी करके बता। If I am the one, then marry me now. और ये माना जाता है कि उस समय स्वयं महादेव आए थे
इन लोगों की शादी कराने। महादेव पंडित बने थे इनकी शादी के, जो कि गंधर्व विवाह हुआ था। मतलब जितने देवी देवता ग्रह नक्षत्र हैं उनको साक्षी मान के उन लोगों की शादी की गई थी। एंड होली was another celebration because of this. होली का जो शब्द है, आप अगर इसकी व्याख्या करो, you will be melted away. होली के वर्ड को 2 वर्ड में डिवाइड करो। होली, हिंदी में होली का मतलब क्या है? मैं उसका, होली मीन्स आई बिकेम हिज और आई बिकेम हर। मैं उनका हो गया या मैं उनकी हो गई। क्या है वो? होली। व्हाट इज होली? राधा कहती है मैं कृष्ण की होली, कृष्ण कहता है राधा की होली। क्या समझ में आया? होली एक शब्द नहीं है। होली 2 शब्द है। आई बिकेम योर्स, यू बिकेम माइन। दैट वाज द सेलिब्रेशन ऑफ दिस। जैसे आपके शादी के बाद एक भोज रखते हो ना आप, सेलिब्रेशंस। होली बिकेम a day of celebration for them. Absolutely, I belong to you, you belong to me kind of stuff. मैं तेरी होली, तू मेरा होली। राधा की कृष्ण होली, कृष्ण की राधा होली। अब बताओ होली का मतलब क्या? आप अब तक बोलते कृष्ण राधा की होली, अब बताओ क्या है मीनिंग उसका? आप अब तक सोच रहे थे कि राधा कृष्ण होली खेल रहे हैं, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, कि राधा कृष्ण होली खेल रहे। नहीं, यू डिडंट अंडरस्टूड। राधा कृष्ण की होली, क्या राधा कृष्ण की हो गई, कृष्ण राधा की होली, मतलब कृष्ण राधा के हो गए। अब आज के बाद होली नहीं भूलोगे। एंड दिस होली आप अपने नाम से उसके साथ जोड़ दो। मैं तेरी होली, तू मेरा होली। Can you see how beautifully all these things have been, एक आवरण में कैसे रखा गया है उन सारे चीजों को। और देखो जब आप खेलते हो रंगों से, क्या खेलते हो, कैसे? When you play with that color, what is that? आपका हाथ का रंग दूसरे के चेहरे पे लग जाता है। What do you mean by that? कि मेरे अंदर का जो रंग है वो तुझे छू ले, तेरे हाथ का जो रंग है वो मुझे छू ले। मैं तेरी होली, तू मेरा होली। That was the reason कि मैं क्यों किसी को रंग लगाता हूं। Means the divine that I am, that divinity of mine, may it touch you and it become and leave a mark on your soul, and your divinity touches my soul and it leaves a mark on my soul. जैसे राधा ने कृष्ण को रंग लगाया और कृष्ण ने राधा को, और दोनों की होली, वैसे ही। और हम क्या कि वो क्या क्या रंग लेके चढ़ा देते हैं लोगों के ऊपर। नहीं, मैं उससे भी, I was not left out in that. I played crazily actually. कितने बार छत से कूदा हूं, कितने बार रस्सी बांध के नीचे उतरा हूं, कितने दरवाजे तोड़ा हूं, कितने ताले तोड़ा हूं, वो मुझे पता है, रंग खेलने के लिए। That's a different dimension altogether. So समझ में आया क्या है होली और कैसे शादी हुई, कौन आके करा के गए? शायद इसीलिए हमसे ही सुने आप। या मृदुल, उनकी कहानियां ना, एक एक कहानी अगर व्याख्या करने बैठो, that these are like you will just bathe in ecstasy in that kind of stuff. You will just और मैंने आपको आधा अधूरी बात बताई। एक बार कैसे एक देवी प्रकट हुई थी, ओके, उसके बारे में किसी दिन बता दूंगा, टाइम हो गया है अभी। अब जाके खेलो होली। इतने साल तो खेले, अब जाके होली खेलो। So that would be I believe like all these years you might have played, but this year you will not play, you will devote yourself in Holi.
धन्यवाद अदिति जी, आपके कारण इतने सालों से छिपा हुआ रहस्य को भी तोड़ दिए हम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। थैंक यू अदिति जी। Okay. So let me see, there were a few questions. Okay. Become yours, become yours. Never. क्या क्या नहीं सुने, आपको क्या क्या बताऊं मैं अभी। कुशासन के ऊपर फीमेल्स का बैठना वर्जित है क्या? So the question is, are female restricted not to sit on कुशासन? अगर वो साधना करती है तो उसके लिए वर्जित नहीं है, लेकिन अगर वो खाली नॉर्मल पंचविधि पूजा करती है तो कुशासन के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। A female should not only sit on a कुशासन if she is doing the पंचविधि उपचार, मीन्स 5 तरीके का, जो आप जैसे पानी छिड़कते हो, चंदन लगाते हो, पुष्प चढ़ाते हो, दिया जलाते हो, धूप जलाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, ये पंचविधि उपचार हो गया। ये उपचार अगर खाली कर रहे हो तो यू शुड नॉट बी सिटिंग ऑन ए कुशासन। लेकिन आप साधना कर रहे हो, मतलब यू आर चैंटिंग ए मंत्र, जाप करते हो या साधना करते हो मंत्र की, तब कुशासन वर्जित नहीं है। यू कैन सिट एंड डू इट। ओके, सो दैट इज ऑल्सो डन। क्या मूर्ति ईस्ट फेसिंग एंड तस्वीर साउथ फेसिंग रख सकते हैं? नो प्रॉब्लम। ऐसा अक्सर हो जाता है आभा जी की जो मेन डेटी जो होता है घर के, उनका मुख तो आप सही दिशा पे रख देते हो, लेकिन बाकी जो छोटे छोटे फोटोज होते हैं उनको घुमा के रखना पड़ता है। नो प्रॉब्लम विद दैट। कोशिश कीजिएगा अगर घुमा के रख पाए, नहीं है इट्स ओके, ठीक है। लेकिन जो मेन विग्रह है आपके घर का, मतलब इष्ट देवी या देवता जिसको मानते हो, उनके मुख को सीधा रखो। यू कीप देम ऑन टू द राइट डायरेक्शन, ठीक। Okay, so thank you everyone. So I will see, and most probably I will try to bring the holy process this coming Sunday itself. If that is coming, I will let you know. If that is not coming, you will know anyways. And certainly I believe like I'll be meeting Mahanirvan before that. Mahanirvan has to do a process, and that is not an option. You have to do it. वो ऑप्शनल नहीं है। ओके, एंड देयर आर अदर पीपल जिनको मैं स्पेसिफिक एक एक चीजें देने जा रहा हूं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट दैट इज देयर। सो बी रेडी। शायद अगले 15-20 दिन बहुत, अगेन यू विल बी रैप्ड अराउंड थ्रू प्रोसेसेस, बट you won't get this kind of amazing time to do that again. After that, ghumo. I feel like till yesterday, Imon was having exams, so his mother was like always around him. But today he is somewhere, mother is somewhere, and they are both free. So ये समय तक, होली तक कर लो, उसके बाद आप अपना घूमते रहो। मैं फिर अगले बार पकड़ूंगा तब आके आप। Okay? So thank you everyone for being here. Thank you everyone for listening to me so patiently. Again, thank you all for all your support in any form that you did through Shivratri. It was because of you all. Even I can say on behalf of Haribhai, it was not possible if you people were not there. So जिसके लिए इतना करे हो, उसकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे. Like may his blessing always be there on you, on your family, on your kids, on your, I just wish that वो आपके चारों तरफ एक ऐसा कवच बना ले जिसको कोई भेद ना कर सके. So with this happy note, मैं तेरा होली तू मेरा होली, अहम ब्रह्मास्मि.